Hare Krishna. So here you can actually see how Krishna, he is always very concerned about his devotees. यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के बारे में विचार करते हैं. He always tries to satisfy his devotees. वे अपने भक्तों को हमेशा संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं. But the devotees, they don't want to take any service from Krishna. लेकिन भक्त भगवान से कोई सेवा नहीं लेना चाहते. They are always endeavoring to please Krishna. उनका प्रयास हमेशा भगवान को प्रसन्न करने का होता है. They want Krishna to be happy. वे चाहते हैं कि कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहे. Because they know, as Lord Kapilada says, that when Krishna is happy, Krishna smiles, then everybody is happy. क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे यहाँ भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि जब कृष्ण प्रसन्न होंगे और मुस्कुराएंगे तो सब कोई प्रसन्न हो जाएगा. So then the devotee's business is actually always to please the Lord. इसलिए भक्त का व्यापार हमेशा यही है कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए. And at the same time, then to make sure that we don't displease him. और साथ ही साथ यह भी निश्चित करना कि कभी भी हम भगवान को अप्रसन्न नहीं करें. So a devotee, he always has to avoid any aparad. इसलिए भक्त को हमेशा अपराधों से बचना चाहिए. And of the aparads, then especially then nam aparad. और सभी अपराधों में विशेष रूप से नाम अपराध से. And of the nam aparad, then we have to be very careful. Then about Vaishnava aparad. और नाम अपराध में भी हमें वैष्णव अपराध के लिए अधिक सावधान रहना चाहिए. And we have to be careful about pramada, हमें प्रमाद के बारे में भी ध्यान देना. inattention, असावधानी जो है उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए. inattention while chanting the holy name, भगवान का नाम जप करते समय असावधानी रखना. inattentive also in relationships, और भक्तों से संबंध में भी असावधानी रखना. inattentive in doing seva. सेवा करते समय भी असावधान रहना. So when we take care of these things, so we are trying to please Krishna by our activity, and we are trying to not to displease him, then he will be happy. तो जब हम इस तरीके से सभी कार्य करते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भगवान को प्रसन्न करें और भगवान को अप्रसन्न ना करें. Now, how do we know that actually what we are doing, then it's pleasing Krishna? हमें पता कैसे पड़ेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या उससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं. We need to perform the activities based on Guru Sadhu Shastra. हमें जो कार्य करना है वो गुरु साधु शास्त्र के आधार पर करना चाहिए. So when we try to please Vaishnavas, we try to please the spiritual master, Shiksha Guru, Diksha Guru, Chaitya Guru. तो जब हम गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, हम शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे. Then when they are pleased, Krishna is pleased. तो जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं. And once one devotee asked Srila Prabhupada, okay, Srila Prabhupada, how can we please you? और एक बार श्री प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं. And Srila Prabhupada simply answered, just follow my instructions. तो प्रभुपाद जी का बहुत सरल उत्तर था कि केवल मेरे निर्देशों का पालन करें. So we need to follow the instruction of Srila Prabhupada. तो हमें श्री प्रभुपाद के आदेशों का पालन करना है. But it is very important to understand what actually the instructions are. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि वास्तव में श्री प्रभुपाद के निर्देश है क्या. Because sometimes, we may see that there may be some contradictions. क्योंकि कभी-कभी हमें देख सकता है कि प्रभुपाद जी के निर्देशों में विरोध है, विरोधाभास है. And if we don't understand the mood of Srila Prabhupada, we don't understand the principles behind, then we may see it as a contradiction.
यदि हम प्रभुपाद जी का भाव नहीं समझ पाएंगे, उनके पीछे का सिद्धांत नहीं समझ पाएंगे, तो हमें उसमें विरोध दिखेगा। And we may even doubt, then if Srila Prabhupada, what's the right thing? और हो सकता है कि हमें प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे संशय भी उत्पन्न हो जाए। But Srila Prabhupada was never contradicting himself. लेकिन श्री प्रभुपाद कभी भी अपनी बातों के विरोधी कोई बात नहीं कहेंगे। His instructions are purely in line with his Guru, Sadhu, Shastra, Parampara. श्री प्रभुपाद जी की सारी शिक्षाएं गुरु, साधु, शास्त्र के अनुगत्य में हैं। And if we want to understand how they are in line, how they are supported, then we can get the realization, we can get the knowledge. यदि हम जानने के इच्छुक हैं तो हमें वो साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है कि कैसे श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाएं पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगत्य में हैं। But if we are trying to see what are the differences, what's the contradiction, oh look, he says he's this thing here, this thing there, it's wrong. लेकिन यदि हम केवल विरोधाभास देखना चाहते हैं कि अरे प्रभुपाद जी ने यहाँ ये कहा है, वहाँ वो कहा है, ये तो एक दूसरे के विरोधी बातें हैं। So we have to be careful because we may be committing Vaishnava aparad or Guru aparad. तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उससे हम वैष्णव अपराधी और गुरु अपराधी बन जाएंगे। Just simply because we are ignorant, we don't know. केवल इसलिए क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हम नहीं जानते। And just because I can see that there are two different points, but I don't understand the principle behind, and I use my intelligence to discriminate, they are different, then there is a difference, and that's wrong. केवल इसलिए कि दो बातें विरोधी हैं और उसके पीछे का हमें सिद्धांत नहीं पता है, तो हम अपनी बुद्धि से ऐसा सोच लेते हैं कि ये गलत है। So if I think like this, I start doubting, and I reject the instruction. अगर हम इस प्रकार से सोचेंगे तो हम संशय करने लगेंगे और निर्देशों की अवहेलना कर देंगे। But that's not how to follow instructions of one's Guru. लेकिन ये सही तरीका नहीं है कैसे हमें गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए। If there is something which we don't understand, then we should accept, okay, all right, it's like this, but I don't understand it. Please explain this to me. यदि कोई वस्तु हमें समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, हमें स्वीकार करना चाहिए हमें समझ में नहीं आ रही है और जाके प्रश्न करना चाहिए इसको हम कैसे समझें। Can I approach Guru? No. Diksha Guru, Shiksha Guru. Approach the Shastra. गुरु को हम जाके पूछ सकते हैं, शिक्षा गुरु के पास जा सकते हैं, शास्त्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। The Sadhu. साधु के माध्यम से भी No. पूछ सकते हैं। So, and as long, keep searching how this point is right and how this point is connected to Krishna. तो हमें इसका खोज करनी होगी कि कैसे ये जो बिंदु लिखी गई है वो सही है, तो कैसे कृष्ण से संबंधित है। Like Parikshit Maharaj, from the womb, he had seen Krishna, he had seen Paramatma, and the whole life, then he was searching for him. जिससे परीक्षित महाराज ने माता के गर्भ में ही भगवान का परमात्मा का दर्शन किया था और पूरा जीवन उनकी खोज कर रहे थे। So we should also do that. We should always try to see how is my activity connected to Krishna. हमें भी इसी प्रकार से खोज करनी चाहिए कि कैसे हमारा कार्य कृष्ण से संबंधित है। How it is in line then with Guru Sadhu Shastra. कैसे हमारा कार्य गुरु साधु शास्त्र के अनुगत्य में। That's very important point. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। Now, I want to mention something back to the first part, how Krishna actually is always pleasing his devotees. तो जो पहला भाग था कि कैसे कृष्ण हमेशा भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। So it's connected with another pastime of Krishna from Bhagavatam. वो भगवान के एक दूसरी लीला से संबंधित है। Actually, is the Damodar Leela. वो है दामोदर लीला। So, when Mother Yashoda, trying to tie
Krishna, she eventually did tie him to the mortar. जब माता यशोदा कृष्ण को ओखल से बांधने का प्रयास कर रही थी और अंततः उन्होंने उन्हें बांध दिया था। And when Krishna starts crawling, or no, with the mortar behind, and he was crawling, then he uprooted the Yamalarjuna trees. और जब कृष्ण ओखल को खींचते हुए रेंगते हुए यमलार्जुन वृक्षों को गिरा देते हैं। So then, as the trees were uprooted, then there were the sons of Kuvera, then Nala Kuvera and Manigriva, right? They were liberated. और जब वे दोनों वृक्ष गिर पड़े तो उन दोनों वृक्षों से कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिगिरी So now they were very, very thankful to Krishna. वे बहुत आभारी थे भगवान कृष्ण के। And they admitted, Krishna, we were wrong, and we are so happy that you were so kind not to liberate us. और उन्होंने स्वीकार किया कि कृष्ण हमने गलती की थी और आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मुक्त कर दिया। And they said, if we go back to the heaven, we will get back into the same situation. और वे कहने लगे कि यदि हम स्वर्ग में वापस जाएंगे तो फिर से हम उसी स्थिति में पड़ जाएंगे। We will just be enjoying and again do some nonsense and again do some aparat. फिर से हम भोग वृत्ति में लग जाएंगे और कुछ गलत कार्य करेंगे और फिर से अपराध कर बैठेंगे। So they said, we would like to go to the Himalayas to do austerity. और उन्होंने कहा कि हम हिमालय में जाके तपस्या करना चाहेंगे। So, but Krishna approved. He said, okay, that's a very good idea. तो कृष्ण भगवान ने अपनी संस्कृति दे दी कि हाँ ये बहुत अच्छा विचार है। And then, but they said, well, we will need some water to live there, so we need some water for purification, for drinking. We need no water. और उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे किसी जल की आवश्यकता होगी शुद्धिकरण के लिए पीने के लिए इत्यादि। So then we need some kund. इसलिए हमें किसी कुंड की आवश्यकता है। And Krishna, just how he is merciful to the devotees, so then he took the rope and he threw it. तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने उस रस्सी को लिया और उसे फेंका। The rope landed in Himalayas and created one kund. और वे रस्सी जो है हिमालय में जाकर गिरी और वहाँ पे एक कुंड का निर्माण हो गया। And the kund is called Damodar Kund. और उस कुंड का नाम है दामोदर कुंड। So, and it's said that they are still there. Nala Kuvera Manigriva. और ऐसे कहा जाता है कि नलकुबेर और मणिगिरी अभी भी वहाँ पे है। Still doing tapasya. अभी भी वहाँ पर बैठ के तप कर रहे हैं। So just how Krishna is Bhaktavatsala, how we can rely on him always. हम देख सकते हैं कि कृष्ण कैसे भक्त वत्सल है और हमेशा हम उनका आश्रय ले सकते हैं। He is the person whom we can trust. वो ही एक व्यक्ति है जिसका हम विश्वास कर सकते हैं। In this material world, it's very difficult to fully trust anyone, right? We can even trust ourselves. We don't know if the mind will betray us or not. इस भौतिक जगत में किसी पे भी विश्वास करना हम उससे कठिन है। हम अपने पे भी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन भी हमें कभी भी धोखा दे सकता है। But we can definitely trust Krishna. लेकिन हम निश्चित रूप से कृष्ण का पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। We can trust Chaitya Guru. चैत्य गुरु के रूप में है। So, therefore, we should not be afraid and to surrender to Krishna. इसलिए हमें कृष्ण का शरण लेने के लिए कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। Hare Krishna. Any questions? इसमें कोई प्रश्न? I would say very nice and detailed, clear.
Hare Krishna. Hare Krishna, when you see in Bhagavatam, there is a story which like you are described. The story, That they are going to Himalayas because they are Krishna's. yes, the end of the story is not described in this volume of Bhagavatam. Where it is described. That's sadhu. We actually know that the Damodar Kund is in the Himalayas, and then the sadhus living there, they know the story. प्रभु जी का प्रश्न है कि ये दामोदर लीला के बारे में हमने पहले कभी सुना नहीं, भागवत में वर्णन नहीं, तो इसका स्रोत महाराज जी ने बताया कि दामोदर कुंड जहाँ पर है वहाँ के साधुओं से हमें ये सुनने को मिलता है, तो इसका क्या इतिहास है? And next to the Damodar Kunda, there is Chakra Kunda. और दामोदर कुंड के समीप भी चक्र कुंड भी है. The Chakra Kunda is, if you look at actually the Kund, you see the chakra on the surface. The reflection is there. He is living inside there. He is there inside. चक्र कुंड को देखने से प्रतीत होता है कि चक्र अंदर निवास कर रहे हैं और उसका प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है. And the Chakra Kund, then it happened when Sudarshan, you have Gajendra Moksha Lila. After killing the crocodile, then the lake was full of blood. गजेंद्र लीला के पश्चात वह जो जल का स्रोत था, कुंड था, वो रक्त से भर गया था. And Sudarshan wanted to purify himself. और सुदर्शन उसे शुद्ध करना चाहते थे. So again went to Himalayas, and then he actually created the Chakra Kund to purify himself. और इसलिए सुदर्शन हिमालय गए और चक्र कुंड बना के वहाँ पर अपना शुद्धिकरण किया. Now in the Chakra Kunda, it's just above Kaligandaki river. चक्र कुंड जो है काली गंडकी नदी के ऊपर है. And the Chakra Kunda then is the source of all the shalagrams. और चक्र कुंड ही सारे शालिग्रामों का स्रोत है. So the shalagram shilas, which are being found in the Kaligandaki, they are actually coming from the Chakra Kunda down to Gandaki. तो गंडकी में जो भी शालिग्राम शिला प्राप्त होते हैं वो वास्तविकता में चक्र कुंड से भरकर आती है. So it's very, very potent place. तो इसलिए बहुत ही शक्तिशाली स्थान है. Hare Krishna. Hare Krishna. We told in the last that surrender to Krishna without fear. As we have seen his many pastimes. And Krishna also says in Gita, Sarvakarman Paritatya Mamekam Sharanam Vrajam. So reject all kind of dharma. Usually when we discuss about this dharma, we discuss naimittic dharma, as a father, as a mother. At the same time when we preach, when we talk with the devotees, we tell about how to balance our life. As a household, you have certain responsibilities to fulfill them. At the same time, to surrender to Krishna. So when we tell surrender to Krishna, we say 6 aspects of Saranagati. But although if someone is following those 6 aspects of Saranagati, as a father, as a mother, as a household life, they have to bring all those things in balance way. So what kind of dharma Krishna is having here, like? Okay. Okay. Very good question. प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हमें अभय होकर भगवान की शरण लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम भक्तों को ये भी कहते हैं कि अपने भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन भी बनाना चाहिए. और कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाओ. शरणागति के 6 अंग होते हैं, तो इसको हम कैसे समझें कि संतुलन और पूर्ण शरणागति को कैसे समन्वय किया जाए? See, Krishna talks about Sanatana Dharma. Right? So the eternal religion. Actually, see, that's the fault actually of the English language. Dharma does not mean religion. Or religion is one aspect of dharma.
but it's not all. तो अंग्रेजी भाषा में जो धर्म का भाषांतर है वो है रिलीजन, वो वास्तविकता में उसका अर्थ नहीं बताता, वो केवल एक भाग है धर्म का। और जब भगवान सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। You can also like add to like what dharma. Dharma also is like a duty or its capability. धर्म किसी का कर्तव्य या उसकी योग्यता भी कहा जा सकता है। Everything and everyone has its own dharma. हर एक व्यक्ति का अपना एक धर्म है। See, like for example, what is the dharma of the floor? उदाहरण, ये जमीन है, इसका क्या धर्म है? It has dharma. इसका भी एक धर्म है। What's the dharma? इसका क्या धर्म है? To hold. धारण करना। Because it follows its dharma, you can sit and not fall. क्योंकि वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप उस पर बैठ सकते हैं और गिरते नहीं। It comes from Sankarshan, right? He holds the universe. और यह संकर्षण से आ रहा है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। So that's the dharma of the floor. ये धर्म है धरती का। Was the dharma, no, of a cup? कप, Yeah. एक Lota. एक लोटे का क्या कर्तव्य है, धर्म है? Then dharma of the lota is to hold water. लोटे का धर्म है कि पानी को धारण करना। Now, if you mix it up, if you put water on the floor, what will happen? Will it hold it? No, it's not its dharma. लेकिन अभी आप मिश्रण कर दें कि पानी जो है धरती पे रखते तो वो उसे धारण नहीं कर पाएगा। And if you try sit onto a cup, maybe it will hold you, maybe not, right? It's not its dharma. और लोटे के ऊपर आप बैठने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको बैठा सके या नहीं बैठ पाए। So like that, you can go on and you can see. Now, what is the dharma of that ladder, right? To hold you up, so you can go up. तो सीढ़ी का क्या धर्म है? उसका धर्म है कि वो आपको ऊपर ले जा सके। But if you try to do something else there, then you may fall. You are misusing the dharma of that particular thing. लेकिन आप उससे और कुछ करना चाहेंगे तो आप गिर जाएंगे या कुछ और घटना हो जाएगी कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। So what is the Sanatan Dharma? तो सनातन धर्म क्या है? Sanatan Dharma of the human beings is to realize that we are Nitya Krishna Das. तो सनातन धर्म है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, कृष्ण के नित्य दास हैं। Now, how do we realize it? हमें इसका कैसे अनुभूति होगी? So Krishna is helping us by breaking it out for us. कृष्ण हमारी सहायता कर रहे हैं उसको छोटे छोटे भाग में समझाने के। So he creates Varnashrama Dharma. उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की रचना की। And within the Varnashrama Dharma, then you have 4 Varnas and you have 4 Ashramas. और उसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। And you follow your duties to achieve the goal of the Sanatan Dharma. और आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं सनातन धर्म के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। So then you have the Varnas, right? So this is according to your nature, you may get engaged in certain occupation. वर्ण में व्यक्ति के गुणों के अनुसार कुछ कर्तव्य होते हैं और इस तरीके से व्यक्ति अपने आप को कार्यान्वित करता है। But for your spiritual realizations, the ashrama dharma is more important. लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आश्रम का धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। So as a brahmachari, you should remain till at least 25 years old. तो ब्रह्मचारी के रूप में कम से कम आपको 25 वर्ष व्यतीत करने होते हैं। Following the vow of brahmacharya. ब्रह्मचर्य के प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। Then most of the brahmacharis will, after fulfilling their vow, then will get married. और ज़्यादातर ब्रह्मचारी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के बाद विवाह करेंगे।
then they will follow the duties of the Grihastha ashram. और फिर वे गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करेंगे। And in the Grihastha ashram, then you are responsible for your parents, you are responsible for your children, you are responsible for your family, you have to make money, you have to provide everything, you have to provide shelter. और गृहस्थ धर्म में आपको अपने माता पिता, अपने पुत्र, अपने परिवार का ध्यान रखना है, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करनी है, उन्हें आश्रय प्रदान करना है। But then, when your duty is over, and that's the time when your children are grown up, and they can now enter the Grihastha ashram. लेकिन जब आपका गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य पूर्ण हो गए, यानी कि आपके बच्चे बड़े हो गए और वे गृहस्थ आश्रम में जाने के लायक हो गए हैं, You are supposed to take up vanaprastha. तब आपका हेतु होना चाहिए कि आप वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करें। We see many examples. Kardama Muni, हम कई सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कर्दम मुनि, he gave a son to Devahuti, Kapila Dev, and he grew up immediately. Okay, but he was grown up, he was able to take care of her. He goes and takes sannyas. He just walks out. कर्दम मुनि ने माता देवहूति को कपिल देव के पुत्र दिया, जो कि तुरंत वयस्क हो गए और वे माता का ध्यान रख सकते थे, इसलिए तुरंत उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। And even though his son was the Supreme Lord, he approved that he goes. He could have said, no, I am here, you should stay here. But no, because it was his dharma. The dharma was to go and take sannyas, because that's what he said. तो भगवान ने कह सकते थे कि आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पे आपके घर में उपस्थित हूँ, कहीं छोड़ के जाने का जरूरत नहीं। लेकिन भगवान ने उसकी स्वीकृति दी कि ये आपका धर्म है, आप संन्यास स्वीकार कीजिए। We see the example of Anga Maharaj. हम लोग महाराज का उदाहरण देखते हैं। He was very great devotee and he was very great king. वे महान भक्त और महान राजा थे। But because of his wife, actually, then she was not a devotee, and then a son was born to them, and there was Vena. लेकिन उनकी धर्म पत्नी जो थी वो अभक्त थी और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन। Very bad kid. बहुत ही खराब बच्चा था। So Anga Maharaj, he tried for 12 years to bring him up as a future king. अंग महाराज ने 12 वर्ष तक प्रयास किया कि कैसे उसे प्रशिक्षित करके अच्छे राजा के रूप में नियुक्त किया जा सके। He tried to make him behave properly, he tried to correct him, he tried to punish him, he did everything whatever he could, he didn't miss anything, but he could not change the nature of Vena. उन्होंने भरसक प्रयास किया, उन्हें दंडित करके, उन्हें प्रशिक्षित करके कि उसका स्वभाव परिवर्तन हो जाए, लेकिन वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। So when he saw that, okay, when I was 12-year-old, I could not change him, I cannot change him now, what's the point of me being here? He went and he just took sannyas. तो उन्होंने देखा कि वेन 12 वर्ष का हो गया है, लेकिन मैं उसका स्वभाव परिवर्तित नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मेरा क्या काम है यहाँ रहकर, तो वे संन्यास ले लिए। He didn't neglect his duties as a king, उन्होंने राजा के रूप में अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं की, because the son, when he is 12, he can now ascend the throne, and together with the ministers he can rule. तो जब बच्चा 12 वर्ष का हो गया तो वो राजा के पद पर बैठ सकता है और मंत्रियों के सहायता से राज्य कर सकता है। He was being very practical. तो वो बहुत ही व्यावहारिक थे। He was very honest with himself. I cannot change him. 12 years I could not. Now I cannot change him. Why should I waste my life here? I should do my duty. I should figure out now how to serve Krishna.
तो वे बहुत व्यावहारिक थे। उन्होंने सोचा कि 12 वर्ष तक मैं इसे परिवर्तित नहीं कर पाया तो मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा, और उन्होंने अपने कर्तव्य पे कैसे मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। And now he didn't want to go when he becomes very, very old and tired. वे तब संन्यास नहीं लेना चाहते जब वो बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हो जाएं और एकदम थक जाएं। He did it at the right time. उन्होंने सही समय पे ये कार्य किया। And that's why he is glorified. इसलिए उनकी महिमा। You see, another example, Dhritarashtra. एक और उदाहरण है धृतराष्ट्र। After the war, all his sons are killed, and he is being blamed for just that he was very bad king. धृतराष्ट्र की युद्ध के बाद सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई और उन पर दोषारोपण किया गया कि उनके कारण ये सब हुआ है। And he was so inimical to the Pandavas. उन्हें कहा जा रहा था बहुत खराब राजा है और पांडवों के दुश्मन है। And now he was comfortable to live in Pandava's palace. और अभी वो पांडवों के घर में ही आराम से रह रहे थे। Such a hypocrisy. कितने बड़े पाखंडी थे। No. So Vidur has to come and tell him, you are a fool. विदुर को आना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। You are so old and so foolish. Get out of here, go to the forest, and at least try now to renounce this world. इस घर से तुरंत निकल जाओ और जंगल जाओ और कम से कम अभी तो संन्यास धर्म का पालन करने का प्रयास। So at the last moment of his life, he actually woke up, and together with Gandhari, then he walked out of the palace into the forest, and then they took vanaprastha. और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने राज्य को छोड़ा और गए जंगल में और वानप्रस्थ स्वीकार किया। So when you are talking about what they should do or we should do, this is what we should do. जब हम बात कर रहे हैं कि किसी को क्या करना चाहिए तो ये हमें पता पड़ रहा है। Srila Prabhupada was clear. Up to 25 brahmachari, up to 50 grihastha, and after that go and take vanaprastha. श्री प्रभुपाद बहुत स्पष्ट थे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ और उसके पश्चात वानप्रस्थ। And if you are into preaching, then also take sannyas. और यदि आप प्रचार भी कर रहे हैं तो संन्यास भी ले सकते हैं उसके पश्चात। But renounce the grihastha duties, the life of grihasthas. लेकिन गृहस्थ धर्म का परित्याग, उससे संन्यास लेना आवश्यक है। Focus now on spiritual life. Go to the dham, go to some at least secluded place, be out of the social gatherings, and just focus on spiritual activities. इस तरीके से समाज से बाहर निकलकर किसी धाम में या पवित्र या एकांत स्थान में जाके अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं पे ध्यान केंद्रित करना होता है। So that's what it should be done. तो ये करने की आवश्यकता है। Now it's up to each and every one of us, how you deal with your life. अब ये व्यक्तिगत निर्भर करता है कि हम अपने जीवन से कैसे कार्य करते हैं। You have your own free will. You can do whatever you want. आपके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है, आप जैसे चाहें वैसे कार्य कर सकते हैं। But you have no control over the reactions which will come. लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिफल आएंगे उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। But then don't blame anyone for your mistakes later on. लेकिन बाद में अपने कार्यों को दोष दूसरों पर मत दीजिए। It's your decision. You make it. You take the consequences. ये आपका निर्णय है और आपको ही इसका परिणाम का भोग करना है। If you don't want to, nobody will push you. Nobody can. It's your free will to do whatever you want. अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई भी आपको बाध्य नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आपकी स्वतंत्र इच्छा है। But maybe you will, maybe you will not have the same luck as Ajamil at the end of your life. लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका भाग्य भी अजामिल जैसा ही अच्छा हो। Maybe you will not remember the Lord at the end. हो सकता है आप भगवान को याद करें, हो सकता है नहीं भी कर पाएंगे। But if you practice devotional activities, at least from the age of 50, whatever
your time is left, you have more chance. लेकिन कम से कम 50 वर्ष की आयु के बाद अपना ध्यान आध्यात्मिकता पे केंद्रित करेंगे तो ज़्यादा संभावना है कि आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे. So that's the right thing to do. यही सही कार्य है. Now if we cannot do it, then at least just be in the association of devotees, have deities at home, and rather try to avoid prajalpa, try to avoid the socializing and focus more on the duties, even though you might be attached still to these grihastha activities. यदि आप घर नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम घर में भगवान का विग्रह रखना, भक्तों का संग करना, प्रदर्भ से बचना और सामुदायिक कार्यों को छोड़ के आध्यात्मिक कार्यों को केंद्रित करने का प्रयास करना. भले ही आप गृहस्थ में आ सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं. But it's not ideal. लेकिन ये It's not the best. सर्वोत्तम नहीं है. So from 50 onwards, you should be engaged fully in the service to the Lord. That's what it is. 50 के उपरांत आपको पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए. And it can be, in the Holidam, can be Vrindavan, Mayapur, or can be here also. You can be fully engaged in the seva to Shri Radha, Shyamasundar, Vaishnava, Goseva, you can do, but just avoid the prajalpa, the grihastha socializing. ये आप धाम में जाकर भी अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में संलग्न करते हैं. यहाँ रहकर भी पूर्ण रूप से राधा श्याम सुंदर की सेवा में, गौ सेवा में, वैष्णव की सेवा में रह सकते हैं. लेकिन जो गृहस्थी का जो सामुदायिक ताना बाना है उससे आपको बाहर निकलना होगा. Yeah? Hare Krishna. Until someone is in household life to the age of 50, until that point he should follow his varnashrama, whatever is prescribed. You always follow varnashrama dharma. If you say the grihastha, whatever is prescribed in the grihastha, then he will go for the detached life after 50. Yes? But he should also see that everything gets arranged, right? So then the children are provided. Now they take care of themselves, but still he provides. Maybe he gives house, he gives them car, whatever they need before he renounces his duties. तो जी का प्रश्न है कि क्या 50 वर्ष तक उसको गृहस्थ पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके बाद वो गृहस्थ हो जाए. हर समय ही वर्णाश्रम का पालन करने से हम आगे कह रहे हैं, और 50 वर्ष तक उसको देखना है कि जो भी आवश्यकता है परिवार की वो पूर्ण करें. See, there is no universal answer. It's individual. Each and every case will be individual. तो इसका कोई एक उत्तर नहीं है, हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग से हमें देखना होता है. You see, like Srila Prabhupada, he got fried with the life, with his wife actually, and then just walked out. जैसे हम श्री प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से तंग थे, इसलिए वो तुरंत छोड़ के चले गए. But he didn't walk out to associate with some other woman. He walked out to take sannyas. ऐसा नहीं कि उन्होंने उस पत्नी को छोड़ के कोई दूसरी स्त्री को स्वीकार किया, उन्होंने संन्यास स्वीकार किया. Right? So that's glorious. Now, if the wife is nice and the husband is nice, they have nice relationship, they can together go. They take vanaprastha, living together, but living together as servants of the Lord. The kids are taking care of themselves. लेकिन यदि पत्नी सहयोगी है पति की, तो वे दोनों ही अपने परिवार को छोड़ के, पुत्रों को छोड़ के, दोनों ही भगवान के सेवक के रूप में जीवन व्यतीत कर सकते हैं. So, the varnashrama dharma has provision for every situation, whatever there is. वर्णाश्रम व्यवस्था में हर एक परिस्थिति के लिए कुछ न कुछ समाधान उपलब्ध है. Yeah? Hare Krishna.
Where is that Damodar and Chakravarti? In Nepal. It's in Mustang region, near China border. It's actually very high. Hare Krishna. Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam ki, Shri Prabhupada ki, Jai Nitai Gaur Pramanande. परम पूज्य भक्ति आदर स्वामी महाराज की